for this webinar. I'm Dr. Shivangi Singh from Team RadarOpus, Bijan Group of Companies. Please stay connected. Our guest will join us shortly. So, as I told you, myself, Dr. Shivangi Singh from Team RadarOpus, and our today's guest is Dr. Prem Sharma. Huh. And our today's guest is Dr. Prem Sharma. He will join us shortly. So, before we start the session, I want to give a brief introduction about myself and the Dr. Prem Sharma. Myself, Dr. Shivangi Singh, and I have done my BHMS from Jyoti Vidyapith Women's University. And our guest is Dr. Prem Sharma. He's a consultant homeopathic physician practicing for the last 35 years. Today, he will give a webinar, and it will really helpful for us. Please stay connected. He will join us shortly. So, before he's coming, he's coming shortly. So, our today's guest, as I told you before, he's a consultant homeopathic physician practicing for the last 35 years, and he's practicing at Uttam Nagar, Shanti Niketan, Dwarka. He's a chief faculty member and the lead speaker of Sehgal School of Revolutionized Homeopathy, has delivered lecture all over India and abroad. So, Dr. Prem Sharma is known for treating all type of acute and chronic cases, treating ill ICU disorders, autoimmune cases, and the most challenging cases in medical system, with the skill of reaching the simillimum using the most important but still less explored the mental sphere of patient. He practices and teaches how to reach the innermost layer of man in the sixth state using an easily comprehensible and efficient method to find the rubric of mind where the actual origin of disease exists. Please stay connected. He will join us shortly. He's coming. Yes. Hello, sir. Hello. Sir, am I audible? Can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Yeah. Okay. Okay. Okay, sir. Sir, shall I start? Yes. A very good morning to all the viewers who have joined us today for this webinar. Myself, Dr. Shivangi Singh from Team RadarOpus, Bijan Group of Companies, and our today's speaker is Dr. Prem Sharma. So, our today's guest has already joined us. Before begin, we let me introduce our honorable guest to all the viewers. So, our guest is Dr. Prem Sharma. He's a consultant homeopathic physician practicing for the last 35 years. He's practicing at Uttam Nagar, Shanti Niketan, Dwarka. He's a chief faculty member and the lead speaker of Sehgal School of Revolutionized Homeopathy, has delivered lecture all over India and abroad. Dr. Prem Sharma is known for treating all type of acute and chronic cases, terminally ill, ICU cases, incurable cases, genetic disorders, autoimmune cases, and most challenging cases in medical system, with the skill of reaching the simillimum using the most important but still less explored the mental sphere of patient. He practices and teaches how to reach the innermost layer of man in the sixth state using an easily comprehensible and efficient method to find the rubric of mind where the actual origin of disease exists. Sir, so now Yes. you start. You can start Yes. your webinar.
Yes. Okay, sir. So, very good morning to all the attendees. I am Dr. Prem Sharma. So, today I am going to share something about Dr. Sehgal's method. So, today's topic is the case taking and how to convert the mental signals of the patient into the rubrics so as to choose the simillimum, which is most effective and very efficient. Practically, we shall go into the seminar because uh, just to produce the result is not that easy, right? To say it is very easy when difficult cases are there, then we need to produce the result, right? So first thing that we everyone encounter with is the case taking, right? So case taking is such an important event that we might be very perfect in our case taking because as we said that a well stated problem is 50% solved, so is very well stated it is 50% solved. So actually what we are going to do in case taking event is not a new one, right? Every whole since beginning speaks about the case taking, and everyone has to take the case. When a patient comes into our room, we have to take a case, right? Because case taking gives us something very, very important upon which we are going to depend in the future over the treatment of the patient. Right? So I would like to share the screen. So we have to find the target while taking the case that where we have to direct the treatment. What is the aim of treatment? Where we have to actually strike the striking point in the patient, we have to find in our case taking. So, what is the target? Hitting the right target, like this gentleman, he is trying to hit this target. So, we also have to do the same thing what we are seeing in the picture. So, how we can find in a case taking, how very easily and very simply we can find that this is the target where we have to strike. So, in our method, that is called Dr. Segal's method or the revolutionized homeopathy, the case taking is slightly different than what traditionally it is generally known. We have to go about the patient, right? If we give the patient some time, right, to speak out, he generally gives a lot of information regarding his sickness, regarding his disease, the way he perceives, right? So our target is the man, right? In case taking, everybody knows, every homeopath knows that homeopathy treats the man, not the disease. So what our target is the man. So whatever the interview we are going to take with the patient, may it be smaller, may it be bigger, may it be longer. So we have to find out the target, and that is the man. Now everybody knows, every whoever knows that nothing new. Everybody says that homeopathy treats the man, not the disease, right? So our target is the man. We have to find out the man and where is the man now? How to target, how to find the information given by the patient, where is the man, right? The man, Dr. Kent says, the man is in the mind, right? If we go to the philosophy of Dr. Robert, then Dr. Stuart Claus,
Dr. Kent, we shall find a lot of information is there that man is in the mind. So this was the line which caught Dr. Segal's mind, that when the man is in the mind, then why to go here and there, then why to find out the things at the periphery, at the physical level, and at the other levels. Straightway, why shouldn't we go to the mind? And man is in the mind, and man is our target. Getting my point? So he put just everything behind this line, that how and what is the easiest way to find the man in the mind. So Dr. Sehgal given us a lot of literature how to find the man and from the information he gave when he encountered the first time, right? Naturally, it is the mind we have to target. Now, it is very clear then when man is in the mind, so mind is our target. So Dr. Sehgal just started exploring the mind section of the repertory to the great extent. He tried that if the mental rubrics are possible in few patients, why not in every case? Why not each and every case can be solved on the basis of the mind? So he started trying this method, trying prescribing merely on the mental symptoms of the patient or the state of mind of the patient in each and every case, may it be acute, chronic, or whatsoever. It may be emergency, it may be any severe sickness. So, given the opportunity to the patient to speak out, he generally states a lot of information. He has a problem. Every patient comes with the problem. Every patient comes to us with a question in his mind of what he seeks an answer from a doctor, or a, you can say, a solution from the doctor, or a remedy from the doctor, right? So how very easily we have to track the person when the patient comes, whatever he states, whatever the information he gives, right? That is what we have to take into consideration. That is what we call is the present, right? So this present is very important. Whatever he states, whatever he gives, the present is always very, very important. You may consider it into for the selection of remedy, or may not consider into for the selection of remedy, but it always gives us the inroads to reach the man, right? We might always start from the present. How we have to then proceed, whatever he gives us at the moment, then we have to explore that case with two words, that is why and how. Why and how will give us the persistence and predominance of the symptoms or the state of mind of the patient. What I mean to say is, when a patient comes to us, what he says, right, whatever the statement he gives, and how he gives, right, and what he does and how he does, these are the two clues we have to always keep in mind. That is, the patient, the way of speaking, the way of sitting, the way of talking, right, and the action he does at the moment, the action. There are some actions and the words which our patient persistently use, right? Many times if we find a patient, one line he may state time and again, time and again. Sometimes we feel that why he is doing so. Many times patient does, doctor, मैं ठीक हो जाऊंगा, doctor, will I be all right? Your question may be different, right? But he will keep on talking like this. मैं ठीक हो जाऊंगा, will I be all right? मेरे को दवाई मिल जाएगी, right? So, and there are some other statements, right? When the patient try to state them, when the patient try to convey them to us, he conveys sometimes very shouting, very crying, sometimes very, you can say, lamenting. What does it mean? When a patient comes, he has
a lot of you can say things in the mind, but out of that we have not to take everything into consideration. Right? What is the persistent? I mean, what the patient says time and again, what the patient repeatedly keeps on telling, even sometimes if you deny it, I have listened it, I have taken it into consideration. Even then, he will keep on saying like that. So that is what is the persistent. That is what is going in the mind of the patient at the moment. And what is predominant? The emotions which are attached with that information that is most important. That will these two things will take us to the deepest layer of the man, so as to know his the mind, so as to know his individuality, so as to know his minimum. So, but we have to rely upon present, which persist and predominant. Very easy to say. And secondly, we have to keep in mind what our patient says and what he does. We have to see why he says like that, why he does like that. These are the three things which are very, very, very important in our case taking, and case taking is over, right? So we have to flow with the patient's feelings. Not there shouldn't be anything imposed by the doctor on the patient. You just tell me like this, because there are a number of way of case taking to reach the innermost layer of the patient. Like many doctors do have the performa to fill up. Many do have doctors to have some other ways of taking the case. But in our method, we just listen to the patient. We try to find by 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 the you can say some few words, that's why and how my patient is like that, why and how my patient does like that, the actions, right? So that will straight will take us to the treatment, to the deepest layer of the patient, so as to give him the right simillimum. So this is all about the case taking. It's very simple and very easily comprehensible. From nothing from doctor's side. It is always the patient who is given the importance, and it should be so as to find the exact minimum. Right? So we shall try to see it practically by seeing some cases. So let us try the first case, how to apply this formula of triple P that is present, which persists and predominate in a patient, and how we put these things practically in our clinic in day-to-day practice. So I have a case of pulmonary tuberculosis. This patient, when she came, is a lady, when she came to my clinic with her husband, she was sitting in the waiting room. I'm giving you a bit of history. And in the waiting room, both the husband and the wife, there was some thought exchange of the word between these two. I was just overhearing, sitting in my cabin. So, what conversation was going there? I am just reproducing their words, what they were doing in the waiting room. The husband was telling his wife, "There's no treatment in homeopathy, but for tuberculosis, why are you behind me? चलो होम्योपैथी लेने चलो, होम्योपैथी खाऊंगी, मेरे से नहीं खाई एलोपैथी, एलोपैथी नहीं खाई जाती, इतनी बड़ी बड़ी गोलियां, इतने बड़े बड़े कैप्सूल्स." वाइफ से मेरे से मैं खा ही नहीं सकती, मेरे गले से उतरती ही नहीं है, मैं कैसे खा लूंगी ये इतनी बड़ी बड़ी गोलियां. But the condition of the patient was really getting serious day by day, because she was not taking the medicine properly, but was given by the allopathic doctor, and she was not finding any other treatment effective. Somebody told my name, they referred to me, and they came, and the husband was in a very, you can say, very aggressive mood. ऐसा ऐसा कहाँ होता है कि यार तुम हेल्थ की इसके लिए होम्योपैथी खाओगी, कभी खांसी जुकाम के लिए खा लो, हो गया काम, ये क्या है, तुम इतनी बड़ी बीमारी के लिए होम्योपैथी खाओगी, खाए नहीं जाते. आगे से वाइफ भी वो, शी इज आल्सो इन वेरी एग्रेसिव मूड, मैं क्यों खाऊं, मेरे से खाई नहीं जाती, बल्कि और उल्टा मैं बीमार हो रही हूँ, गले में फंस जाती है, मेरे से निकलती नहीं, निकली नहीं जाती दवाइयाँ जी, उल्टा जब से मैं दवाई खाने लगी मैं और बीमार हो गई.
कहती मुझे दवाई चाहिए ही नहीं, मैं खाऊंगी तो होम्योपैथी खाऊंगी। अरे मर जाओगी, हस्बैंड सेज, मरोगी तुम, हालत देखो, अपने एक्सरे देखो, कितना पानी भर गया तुम्हारे लंग्स में। और डॉक्टर ने बोला कि अगर दवाई नहीं खानी तो ज्यादा दिन की बात नहीं है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेट अस सी द एक्सरे रिपोर्ट। If you see the impression, shows the right pleural effusion. Lungs field do not reveal any active parenchymal pathology. You can see the report. The next report is mounted. It is positive. The area of induration is 15 into 18 mm. Next ultrasound was done. It also shows the right pleural effusion. So this was the case. So if you see, when this patient came into my chamber, they just told me that doctor, she has TB. The husband was really very aggressive. Doctor Saab, just tell her that there are no medicines in homeopathy. Why doesn't she take allopathic medicines? Why doesn't she take the anti-tubercular medicine? Because her condition is not well, right? So he started telling me like this, and the lady, I'm not going to take any medicine. I'm not going to take those big capsules. वो तो मेरे गले से उतरते ही नहीं है। मैं कैसे खा सकती हूँ इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ, इतनी दवाइयाँ खाओ और ऊपर से और बीमार हो जाती हो। जो खाया, थोड़ा बहुत खाया भी जाता, वो दवाई खाकर वो भी निकल जाता, वो भी ठीक हो जाती है मेरे। डॉक्टर साहब, हस्बैंड सेज, डॉक्टर साहब क्या बताएं आपको, इट इज रियली वेरी टफ टू गिव हर एनी मेडिकेशन। मेडिसिन कोई खा ही नहीं सकती, इसकी बच्चों की तरह इसको पकड़कर पकड़ना पड़ता है, तब इसके मुंह में कोई कैप्सूल डालते हैं, और डालते भी क्या, वो फिर बाहर। So that was the information. That was my case taking. Case taking was over here. Just just see, if you look at this information, it looks very superficial, conveys no meaning. But if you see deeply, the patient has conveyed herself, what she wants and what she does, how she does, and what she says and how she says. So this was a small conversation that happened in my chamber and in the waiting room that I overheard. So from this, I selected a remedy, right? That was, just see, the first rubric I took was right desire. Right desire means this patient was not ready to take those heavy medicines. Patient says, I cannot take those such big capsules. मेरे गले के अंदर उतरता ही नहीं है. She wants light, right? Anything light. Light doesn't mean the light, or literally meaning anything which doesn't has the weight, which doesn't cause you any inconvenience is light. जैसे हम लोग कहते हैं कि लाइट खाना खाओ, लाइट दवाइयाँ दे दो, लाइट एंटीबायोटिक दे दो मेरे को। सो ये क्या, एक लाइट मेडिसिन इसको चाहिए थी, ठीक है, एक ऐसी चीज चाहिए जो कि गले के अंदर उतर जाए जल्दी से। एंड द सेकंड रूब्रिक I took was, these are the medicines, you can see a number of medicines, 33 medicines were there. And the next medicine, which the next rubric taken was, which is the emotional aspect. You see that our patient, what he does and how he does, why she was so aggressive, because the husband was trying to administer the remedy forcibly, right? उसको कैप्सूल खिलाने हैं, उसको एंटीबायोटिक्स देनी है, उसको सारी चीजें मतलब अपनी मर्जी से देनी है। मतलब he was so dominating in this aspect कि नहीं तुम्हें खानी ही पड़ेगी, आगे से वो भी मानने के लिए तैयार नहीं, right? So very small information and very informative and very much pregnant with the meaning. That is, she was showing the rage. It was the rage of the patient. Why? Because she was being administered the medicine forcibly, and only remedy we have is the belladonna. So belladonna was given to this patient, particular patient, which otherwise we generally you do not think like giving belladonna to such a patient who is suffering from such kind of sickness, that is tuberculosis, and has the pleural effusion, had very high fever, lost appetite, lost weight, and all the symptoms were there, right? So what happened after giving this medicine,
let us see the after 3 weeks after giving medicines, the X-ray report shows the pleural effusion started organizing. So that was a sign of recovery for me. So I was confident I'm on the right track. My patient is recovering. The appetite returned. Patient felt well. The fever went down. So the energy level improved. All these signs were there, and the patient felt very well. And then after that, another X-ray was done, which shows hmm, normal studies. So just see, it was so simple to take the case. It was so simple to convert the information given by the patient spontaneously in the, you can say, the waiting room and in my chamber. So I did not just ask anything else. It doesn't require anything else to happen, because such things generally do happen in our clinic very frequently. What our patient does and why he does, that is very important. So there was a conversation going on in the waiting room between these two, husband and wife. Husband was trying to give her the medicine forcibly, and she was denying it with the same aggression, right? So the rubric was very clear. Even before they enter into my chamber, my selection was done. How simple it is. Really, it is very, otherwise if you go the other way, if we are really going to ask the why this happened, what is the miasm, what are the other things behind your sickness, so nothing of that sort was taken into consideration while selecting the remedy. Just two rubrics, right? And the medicine is clear and patient was out of the blues. So it's very simple. So this was the first case, and after treating this patient, really I got many more difficult patients, some cancer patients, and how does it matter whatever the disease may be? We have to treat the man, and man is in the mind, and that is what we have to take into consideration while selecting the remedy for a patient. May he be suffering from a common cold and cough, or it may be TB. So actually, if you see this range rubric, range from forcible administration of the remedy, right? This generally you get in the children very often, because the small children are not ready to take the syrups and other drugs as well, and they do react very aggressively, right? They have to hold to give the medicine. उनको इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, तब कहीं जबरदस्ती पकड़ कर उनको मेडिसिन मुंह में डालनी पड़ती है, and they vomit out, right? This is very common phenomena. So maybe a child, may it be an elder, a grown up person, or whatsoever may be, right? If this expression is there, medicine is going to be belladonna, irrespective of the name of the disease. So we have to see what our patient says and how he says, right? So it is very simple. So next case I am going to tell you is a case of fracture of a femur, right? Few days back, one of my patients from Ranchi gave me a call. Doctor, his father is 80 plus, living in Jamshedpur, has fell down in the bathroom and got his femur fractured. And he is admitted in the hospital, and he has some problem. It's the 7 days now. They are not doing anything because his potassium level has gone very low, because the potassium level is not improving and they are not able to do the surgery, right? So I have the audio of that patient. Let us try to listen what that patient says in his original voice. This audio was recorded on 29th of June. So let us listen to this audio. मेरे जो पिताजी हैं वो Is it audible to everyone?
Yes, sir. Okay. ठीक है, हमने वही मिल गए और उसका जो थाई का जो हड्डी था वो टूट गया, तो हॉस्पिटल में करना पड़ा। हॉस्पिटल हुआ है 7-8 दिन, लेकिन हॉस्पिटल ऑपरेशन इन लोग कर नहीं पा रहे क्योंकि इनका जो है एक तो लंग्स का कंडीशन सीरियस के चलते बहुत खराब है, और दूसरा जो है इसका पोटेशियम लेवल बहुत ही कम है, 2.5 2.6। तो इलेक्ट्रोलाइट लेवल इतना जब कम होगा तो ऑपरेशन नहीं करेंगे लोग। तो क्योलाइट नाम का एक दवा है, 3 बार दे रहे हैं 2 चम्मच करके, जिसमें इसके बावजूद नहीं उठ रहा है। क्रिएटिनिन, किडनी बिडनी ये सब ठीक ही है। अच्छा, हॉस्पिटल में है, लेकिन अभी इन लोग भी, डॉक्टर भी लोग भी बहुत हैरान हो गए कि क्यों नहीं उठ रहा है। 3-3 बार दे रहा है, पूरे एक बोतल दवा खत्म होने जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो ऐसा आपके कुछ कारगर कुछ दवा है कि तुरंत 1-2 घंटा में वो 1-2 दिन में वो पोटेशियम लेवल उठा सकता है? पता टाइम नहीं, क्योंकि ऑपरेशन के लिए जरूरत है। उनको परेशानी क्या महसूस कर रहे हैं वैसे वो अभी? परेशानी तो अभी हॉस्पिटल बेड में है, एकदम मतलब परेशान है, सब कुछ रहना नहीं चाहते हैं, पैर छूटा हुआ है, कोई उपाय भी नहीं है इनका। इसके अलावा थोड़ा इनकोहेरेंट बात भी हो रहा है, मतलब वो बहुत कुछ हो रहा है, मतलब वो बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अभी लग रहा है यहाँ पे ज्यादा दिन मैं जी नहीं पाऊंगा, हॉस्पिटल का मुझे माहौल है पसंद नहीं आ रहा है, मुझे घर जाने दीजिए, इस टाइप का। और डॉक्टर लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये वो करके, वो डॉक्टर बहुत बड़ी बदमाश है, ये सब बोलते जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी क्या हुआ है अभी समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, अच्छा, तो क्या कहते हैं यहाँ नहीं रहना हॉस्पिटल में? नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहते हैं, और हॉस्पिटल का माहौल भी जैसा होता है ना, पूरा वार्ड में बहुत किस्म के पेशेंट्स आते हैं, वो देख के भी काफी तकलीफ हो रही है, और पेट जो है वो भी साफ नहीं हो रहा है, उनका फिस्टुला हुआ है, फिस्टुला के लिए ऑइंटमेंट दिया गया, ऑइंटमेंट लगा नहीं पा रहे, मतलब टोटल एकदम, मतलब ये सिचुएशन। हाँ, अभी हो गया, 7 दिन हो गया, वो भी सही है, इस उम्र में तो इतना भी दिक्कत है। अभी तुरंत हम लोग चाहते हैं कि पोटेशियम लेवल तुरंत उठ जाए और ऑपरेशन हो जाए। तो उसके पास में कौन है? उनके पास में तो कोई नहीं है, उनके पास तो फोन तो है, फोन रखा गया, लेकिन वो अटेंडेंट एक तो रखा है, लड़का है। अच्छा, और कभी कभार हम लोग का जो है डेली भैया लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तो टाटा में है अभी, तो 2 टाइम जा रहे हैं, सुबह और शाम। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो उनको कहना एक बार मुझसे एक बार बात करें आपसे। हाँ हाँ, अच्छा, लेकिन आप समझ नहीं पाइए उनके बात, क्योंकि वो दांत खोल चुका है ना, तो खोल दिया, वो जो डेंचर जो है ना, वो खोल के बोल रहे, साफ बात सुनाई नहीं दे रहा, फिर भी देख लीजिए। कोई जो भी बोलेंगे, जो साथ में रहेंगे ना, उनको कहना बाद में मुझे बता दें वो क्या कह रहे थे, ठीक? अच्छा, उनके पास में कोई ना, तो आपको एक होगा ना? जी जी जी, हाँ, कोई अटेंडेंट है, वही होगा, उसको भी समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, देख लेते एक बार आप पूछ के, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। अच्छा, बांग्ला में बोल रहा है, लेकिन सही तरीके से सुनाई नहीं दे रहा है, हम फिर भी अगर उठाते हैं कौन बोल रहे हैं। ठीक है, उनको खोल के रखा है, कृपया। हाँ डॉक्टर साहब, पिताजी है लाइन में? हाँ जी हाँ जी। हेलो हेलो, अभी सुन रहे हो? हेलो हेलो, डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार। हाँ हाँ, मामला है। अच्छा, हाँ हाँ, एक बात सुनाई पड़ी, जो लोग बोल रहे हैं आपस में। हाँ हाँ, होगा। हाँ हाँ, क्या यहाँ है, हो सकता है या नहीं। मैं सोचता हूँ कि यार मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी जो टीचर वगैरह और के बारे में क्या रहते हैं, उसको गलती क्या करना है,
can't like that. 5 6 so ज़्यादा देरी हुई इसलिए आपसे पैदा चाहता हूँ तो ये हमने करिया है कि आप समस्या बताइए या विश्लेषण बताइए उसके हम देखेंगे आपके पास चल सकते हैं इस वे तो आप बताएंगे क्या क्या हो रहा है बताएं कि 7-8 दिन हो चुका है काफी परेशान है डॉक्टर लोग तो बताएं कि पूरा 100% सही नहीं होगा चलने लायक होगा और वो पोटेशियम जो है वो घटते जा रहा है तो इतना दवा इन लोग दिए जा रहे हैं फिर भी और ये माहौल जो है माहौल काफी तकलीफ हो रही है माहौल में ज्यादा दिन रहेंगे तो शायद हम और जिंदा नहीं रहेंगे ये सब बोल रहे हैं already शक्तियाँ का 9% जो है तो अगर नहीं है कहीं पर करके रहना वो एक्चुअली क्या हो रहा है ना इनका जो पेट जो है एक बार तो कॉन्स्टिपेशन पूरा पेट में बिल्कुल एक्चुअली वो बहुत गिर जा रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है निकल ना निकलेगा या थोड़ी कॉन्स्टिपेशन एक्टिव है उसके ऊपर आपका फिस्टुला का भी प्रॉब्लम है Excuse me, sir. Yes, yes. सर काफी सारे व्यूअर्स को ये ऑडियो ऑडिबल नहीं है तो एक बार आप वर्बली ये केस एक्सप्लेन कर दीजिए मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ यस सर So the problem is this patient has got the fracture of the femur which is to be operated, right? The problem coming on the way is that his calcium level is falling, potassium level is falling day by day because they cannot operate unless the potassium is at the normal value because what is the function of potassium? Potassium is very, very necessary for the contraction and relaxations of the muscles and the intracellular fluid maintenance, right? So it can affect the heart because heart is a muscular organ. If the potassium falls, right, the contraction and of the muscles of the heart can be affected and anything can happen during the surgery, right? So this was for it was the 7th day. The potassium was not being maintained and they are postponing the surgery. So patient says, what is the problem of the patient? It is not the problem of the patient, it is rather the problem of the surgeon. But patient says that ये जो माहौल है यहाँ पर ये अच्छा नहीं है मेरे को तो लगता है कि मैं यहाँ मर जाऊंगा मैं यहाँ जिंदा नहीं रह पाऊंगा ये माहौल जहाँ हॉस्पिटल का जो है ये मेरे को किसी भी तरीके से कन्वीनियल नहीं है दैट वाज द ओनली इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पेशेंट अदरवाइज जो भी पेशेंट बोल रहे हैं पेशेंट बोल रहा है one is the language problem he is talking in Bangla most of the time and secondly because he is not having the denture at the moment so uski wajah se bhi proper pronunciation usse ho nahi rahi so it was very difficult so his son translated into these words कि माहौल जो है उसके लिए कहीं भी उसको परेशान करा हुआ बहुत ज्यादा परेशान वो माहौल से ना आगे फ्रैक्चर से है so how my patient perceives the sickness how the patient perceives a situation is the most important. It is not the situation, it is the rather perception of the patient, how he perceives, right? So आप देख रहे हैं कि यहाँ जो माहौल है पेशेंट को ये उसको बिल्कुल किसी भी तरीके से उसको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है मेरे को बहुत माहौल ने ही खराब कर रखा हुआ ये जो हॉस्पिटल का माहौल है So these were the information given by the patient. So what I did, so ये जो माहौल को बार-बार माहौल कहना persistently and predominantly the माहौल word was being used by the patient time and again, right? So माहौल को देखना था कि मुझे ये माहौल कहाँ से खराब कर रहा है पेशेंट को and how to decipher this information. So the first rubric I took was delusion injury being injured is surrounding by his, right?
व्हाट इज द माहौल? माहौल इज आसपास का वातावरण, सराउंडिंग, उसकी सराउंडिंग ने ही उसको परेशान कर रखा हुआ है, ना कि उसकी इंजरी ने, राइट? इंजरी तो है, पड़ा हुआ वो, ठीक है, नो डाउट, बट पेशेंट की परसेप्शन क्या है कि जो माहौल में मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे तो लगता है ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, राइट? मैं माहौल से बहुत परेशान हूँ. And the second rubric, which is occupying the patient, was predominantly and persistently was the death presentiments of, right? So these two rubrics came into my mind immediately, and when I joined these two rubric, I find the medicine was the lachesis, and it was given in 30 potency, and the follow-up came just in 15 hours. It was given on 29th, somewhere around 5:30, and tomorrow on 30th morning, next day, the audio I'm sharing. Yes. आपको आपको लाखों सलाम, हैट्स ऑफ टू यू. कैसे है डिफीट? 3.9 3.9 वेरी वेरी गुड. चलो 2.7 2.6 में था, मतलब ये विश्वास नहीं हो रहा डॉक्टर साहब. चलो बहुत अच्छी है, ठीक है, अब ठीक. So on 30th, as soon as this potassium level reached normal, the patient was taken for surgery, and successful surgery is done, and patient is now out of the blues. उसका सर्जरी हो गया और वो हॉस्पिटल से बाहर है, वो ठीक हो गया. Now what I have to do, just see हमारे पास क्या ऐसा है, क्या कौन सी मेडिसिन है जो पोटेशियम को रेज कर सकती है, राइट? अगर हम सोचे तो नथिंग इज देयर, बल्कि हमारे से अच्छी मेडिसिन जो सप्लीमेंट्स वगैरह जो भी है, बट एलोपैथी में है, वो ट्राई कर ही रहे थे फॉर द लास्ट 7 days, राइट? एंड day by day, on the contrary, the potassium level was falling instead of going up. So हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया, right? Just I took the kind of state the patient is in at the moment. जो भी पेशेंट ने उस स्टेट को परसीव किया, और उसको लेने के बाद में उसी को हमने डिसाइफर किया into the repertorial rubrics, and the medicine is given. So ये कहीं भी लिखा नहीं है लेकिसिस के लिटरेचर में कि it can raise the potassium level, right? So I have to strike at the target, setting the right target. Whatever the target where my patient is being, you can see, जैसे वो परेशान हो रहा है, जैसे वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है एट द मोमेंट, उसके दिमाग में क्या प्रीऑक्युपाइड किस चीज ने कर रखा है, दैट वाज द टू थिंग्स. कि माहौल बहुत खराब है, एंड अगर ये माहौल में मैं रहा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डाई, राइट? उसको मरने का ही डर ये हो रहा था साथ में, राइट? तो दीज टू रूब्रिक्स, लैकिसिस एंड आवर जॉब इज डन. सो जस्ट सी आवर होम्योपैथी कैन हेल्प इन सच केसेस एज वेल. ठीक है, हमने सर्जरी नहीं करी, हमने उसको ज्वाइन नहीं किया, उसको हमने कुछ नहीं किया, बट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया लैकिसिस ने, जो कि आपने देखा ही कि फॉलोअप में उसका ऑडियो आपने सुना उसके सन का. वेरी नेक्स्ट डे ही हिमसेल्फ वाज सरप्राइज कि ये कैसे हो गया. सो इफ वी प्रिस्क्राइब रियली ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पेशेंट, द रियल पोटेंशियलिटी ऑफ द मेडिसिन इज रिलीज्ड. Our medicine's potentiality is great, right? When they are prescribed meant on the state of mind of the patient, right? So that was the follow-up, and the patient is now back home, right? If you see the some more supportive rubrics, yes. What is the problem with the lachesis, and what was the problem with the patient? Because of the fracture, he was confined to bed, right? And lachesis has the aversion to sit. लैकिसिस को क्या बैठना बहुत मुश्किल है, वो बैठना ही नहीं चाहता. सबसे बुरी बात उसको लगती है कि मुझे एक जगह टिक कर बैठ जाना, या कन्फाइन हो जाना, या उसकी मूवमेंट को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, राइट? क्यों? बिकॉज लैकिसिस इज वेरी प्लेफुल एंड ही वांट्स द अम्यूजमेंट. उसको तो बस अम्यूजमेंट चाहिए हर वक्त, इधर उधर घूमकर खा पीकर, चाहे जैसे भी वो आती हो. That's why we have some more rubric. We see reveling and dormant, right? Reveling means what? जैसे हम लोग कहते हैं ना, आजकल का अगर माहौल देखें तो क्या बच्चे क्या करते हैं? घूमना फिरना,
रंगरलियां मनाना और बाहर खाना। तो ये जो आजकल का माहौल है उसमें लैक्टिसिस बहुत चलती है, राइट, वेरी फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड। ऐसे बच्चे आपको आजकल बहुत मिलेंगे जो फ्रेंड्स के साथ घूमना और बाहर होटलों में खाना, राइट, ये खाना वो खाना, बड़े स्वाद है, घर में खाना ही नहीं, राइट, घर में टिक कर बैठना ही नहीं। उनको खेलने में जो अम्यूजमेंट मिलती है, जो उनको दोस्तों के साथ घूमने में रेवलिंग, राइट, एंड गवर्नमेंट खाने पीने में मस्ती, ये जो मस्ती है लैक्टिसिस को यही चाहिए होती है। दैट वाज द मेन रीजन व्हाई आवर पेशेंट वाज सो मच परेशान कि यार वो माहौल में क्यों मैं 7 दिन हो गए बैठे हुए, ये कुछ तो मेरे को मार देंगे। दैट इज द डेथ फॉर द पेशेंट, क्योंकि उसकी मूवमेंट उसकी बिल्कुल वो बंद होगी, ही इज कन्फाइंड टू द बेड, राइट। नेक्स्ट, and what it causes sadness with impeded respiration, अगर उसको घुटन महसूस होती है, he becomes very sad कि यार मेरे को तो बांध के रख दिया इन लोगों ने, राइट। वो सैडनेस उसको नहीं चाहिए। what he wants, what he desires is the amusement, is the रंगरलियां मनाना, मौज मस्ती करना, खेलना, ये लैक्टिसिस को पसंद है। लेकिन पेशेंट के साथ क्या हुआ, जैसे ही वो बेड में गया तो बिल्कुल वो कन्फाइन हो गया एंड सारी मूवमेंट उसकी जी सब कुछ बंद हो गया। बट एनीवे, सो लैक्टिसिस हेल्प दिस पेशेंट वेरी मच एंड ही इज बैक होम, ही इज वेरी मच फाइन एंड जस्ट सी हो। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि लैक्टिसिस भी कभी ऐसा काम कर सकती है, कहीं नहीं लिखा, राइट। एनीवे, so we are running out of the time, and the next case, very short case and very important, a case of hepatitis B. Here is the report. You can see it is reactive hepatitis B. Way back, a patient was brought to me by her husband, right? It's again a lady. अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चीज थी बड़ी जो आपकी नोट पड़ती है, that is against the name nothing is written, right? Referred by nothing is written. I was shocked why this is not written. When they show me this report, उनसे पूछा कि आपने नाम क्यों नहीं है आपका जहाँ लिखा, डॉक्टर का नाम नहीं लिखा। तो शी टोल्ड मी, डॉक्टर मैं तो दवाई भी नहीं लेना चाहती। अच्छा, दवाई क्यों नहीं लेना चाहती? एक्चुअली इट इज माय हस्बैंड हु ब्रॉट मी हियर। हस्बैंड लेकर आए हैं मुझे, क्योंकि इनको भी प्रॉब्लम है जी, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है वो भी, और मेरे को भी इनसे हुई है। एंड मैं मतलब ये अपनी ये बीमारी है, ये मतलब लाइट में नहीं आना चाहती, किसी के मतलब नज़रों में आऊँ, ये मैं नहीं चाहती। सो मैंने अपना नाम भी नहीं लिखाया था जब टेस्ट कराया, बट रेज्ड आफ्टरवर्ड, राइट। तो बड़ी अनयूजुअल सी थी चीज़। मैंने पूछा, जैसे मैंने पूछा उससे कि क्यों नहीं ये लिखा, तो शी सेड कि मैं मतलब दूसरे की नज़रों में क्यों आऊँ, और मैं तो ट्रीटमेंट भी नहीं लेना चाहती। दिस इज माय हस्बैंड, ऐसी खामखा। मैं एक बार पहले हुआ था पॉजिटिव, मैंने ट्रीटमेंट दिया था, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तब तो बंदा लगता है ठीक है, पहले कभी पॉजिटिव हुआ था, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था, तो मैं दवाई लिया था, ठीक है, मेरे को तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसको हस्बैंड ने लाकर जब मेरे सामने लाया तो शी सेड लाइक दिस। तो अब वैसे उसको कोई सिम्टम्स है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम भी है ही नहीं, कोई भी नथिंग। अब आप हिस्ट्री लो, पास्ट हिस्ट्री लो, फैमिली हिस्ट्री लो, इधर उधर जो भी डिजायर्स वर्जन व्हाटएवर, nothing was there, nothing remarkable was there which is to be taken into consideration. But if you see this information, it seems to be very common information, anybody can give like that. So lekin the beauty of our system is that how to convert this information into the meaningful rubrics so as to select the remedy. So ये एक चैलेंज था कि अब आप करो ट्रीटमेंट इसका। तो ये केस लेने के बाद में मैंने उनको मेडिसिन दी, तो उसने क्या बोला कि मेरे हस्बैंड जो है खाम के गड़े हुए मुर्दे काटते रहते हैं। गड़े हुए, मैं बड़ी एक मजाकिया सी बात करी कि ये गड़े हुए मुर्दे क्या हुआ, कि मैं तो कहती ठीक है, अब जो हुआ पहले ठीक है, वो दवाई खाए दब दुब गया होगा, अभी ना कोई प्रॉब्लम है, ना कुछ करना है, ना कि कुछ करने की जरूरत है, अब ये ट्रीटमेंट शुरू करो। तो एनीवे, तो
first rubric came into my mind is why she doesn't want to be come into the light. गड़े हुए मुर्दे क्या होते हैं? What is मतलब कोई चीज थी कभी पहले, उसको दबा दिया गया या उसको सप्रेस कर दिया गया या उसको ऐसा कर दिया गया, इनएक्टिव कर दिया गया, हम तो ठीक ही हैं, कोई परेशानी तो है नहीं, राइट? तो फर्स्ट रूब्रिक केम इनटू माय माइंड कि व्हाई टू गो फॉर एनी ऐसे खामखा पंगे लेने की क्या जरूरत है? शी वांट्स टू बी रिमेन इन द बेड, राइट? बेड मींस it is a comfortable state. It is a state where there is no problem. One is quite is in quite a good conditions. ठीक है, मेरे को तो कुछ है ही नहीं, ठीक है. And second rubric is illusion. Well, he is हाँ, उसको लगता है कि मैं तो ठीक ही हूँ, है ना. एंड सबसे बड़ी बात जो थी कि why to मतलब हम क्यों उजागर हों, मैंने उनको जी अपना नाम क्यों बताऊं मैं, लोग पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या मुझे नफरत करेंगे या क्या करेंगे, ये हेपेटाइटिस बी है जो मेरे से दूर दूर भागेंगे, क्या होगा. सो दैट वाज राइट अवर्जन टू, क्योंकि ना तो उसने अपना नाम लिखा, इवन डॉक्टर का रेफरेंस जिसने दिया उसका भी नाम नहीं लिखा रिपोर्ट पर, ठीक है. लाइट को बिल्कुल वो शन करना चाहती है, अवर्स, शी इज अवर्स टू द लाइट, राइट. एंड नेक्स्ट रूब्रिक इज कि जो लोग मेरे को कैसे रिएक्ट करेंगे, लोग मेरे को कैसे देखेंगे, राइट. सो फियर इमेजिनरी थिंग्स ऑफ द मैनेजमेंट. सो इफ वी join these four rubrics, the only medicine we are going to get is Hyoscyamus. So Hyoscyamus was given in 30 potency and the report came just in 3 weeks time, and after 3 weeks the follow-up was done and it shows the non-reactive. Just otherwise, such a big problem. Hepatitis B has got no treatment otherwise, right? Neither in allopathy nor in any other science. करते हैं लोग, देते हैं दवाइयाँ, देते रहते हैं, but कोई ऐसा treatment है नहीं. But just see how common these informations are, right? And if we convert these mental signals into the appropriate rubrics, we are going to get a simillimum which can uproot the otherwise supposed to be the dangerous infections, dangerous viral infection or whatever, right? Hyoscyamus, nowhere in Hyoscyamus it is written that it is the medicine for hepatitis B, but it is a very common medicine otherwise, and just in a very short time, just 3 weeks time, and it is non-reactive, right? So great. I was also surprised in such a short time. How does it happen, right? उसके बाद भी हमने देखा कि शायद कहीं ऐसे ही तो नहीं हो गया. तो उसके बाद कम से कम मैंने वो पेशेंट केम इन टच विद मी, हमने उसको रखा कि देखते हैं उसके बाद क्या होता है. 1 साल से भी ज़्यादा मैंने उसको रखा अपने ऑब्जर्वेशन में. Then again this hepatitis B surfacing was done, and it came, concentration came just 000, right? So this is how a very common medicine can cure such a big infection which has otherwise has got no treatment, right? So using the mind has taught by Dr. Sehgal, really it is a wonderful, amazing result. That is why it is called the revolutionized method. So these are the few cases that I could give you in such a short time. Dr. Shivangi, can we go further, or you have to stop here? सर yes, टाइम अब खत्म हो चुका है, तो हमें यहीं पे स्टॉप करना होगा. चलो ठीक है, it's okay. If there's any question, anything you want to ask, anybody want to ask, you can. सर कुछ क्वेश्चंस हैं व्यूअर्स के. Yeah. सर एक क्वेश्चन है, देयर इज अ रूब्रिक आल्सो माइंड रिफ्यूज टू टेक मेडिसिन. Yeah. In fact, it was not refusal, right? It was not refusal. He was ready to take, but his concern was something else, right? She wants the light medicine, right?
which can go, जो उसके गले में पार हो सके। वो तो एक्चुअली उसका कहना ये था ना कि ये इतनी हैवी मेडिसिन मैं कैसे खाऊंगी, ये तो गले में ही नहीं निकलती मेरे, है ना, राइट। तो बट शी वांटेड एक्चुअली इज द लाइट। होम्योपैथी इज वो मीठी मीठी मुंह में रखो घुल जाती है, हो गया काम, राइट। सो दैट्स व्हाई द rubric was taken as light desire for, right. So it was not the refusal to take any medicines, right, but कोई भी लाइट मेडिसिन उसको चाहिए थी, इसलिए rubric, appropriate rubric will be light desire for. Yes, So please. next question is how many time Legacies 30 was given? Once only. Once only. Okay, sir. So next question, delusion injured by surrounding. मीन्स माहौल, व्हाट इज माहौल, माहौल जो खराब था, मुझे माहौल अच्छा नहीं है तो माहौल से मैं बहुत परेशान हूँ, राइट। इट वाज द सराउंडिंग, माहौल मीन्स जो आसपास आपके इर्द गिर्द जो वातावरण है, जो आपके बेड के आसपास में, आपके रूम में, आपके घर में जो माहौल शब्द यूज किया गया, तो जस्ट कि जो वो माहौल उसको परेशान कर रहा है, जैसे वहाँ पेशेंट आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, आकर किसी ने कुछ कह दिया, वो आ रहा है, ये आ रहा है, जब माहौल जैसा भी था, it is the perception of the patient, that is what we have to take into the consideration. He perceives that I am being, मतलब मैं ज़्यादा परेशान अपने माहौल से हूँ, इतने उसने कंप्लेन ही नहीं करा, उसने जो भी ऑडियो था उसका 2 मिनट का जो भी उसमें सिर्फ उसने माहौल को ज़्यादा परेशान, मतलब मैं परेशान किस चीज़ से हूँ, माहौल से। So that's why the rubric was taken, delusion injury is being by the surrounding. So next question, potency for the belladonna and the frequency the remedy was administered. The remedy was given in 30 potency only first time, first visit, during no repetition till end, because as the medicine was given, the curative action started. Throughout it was on and on and on, no repetition. Next. So next question, emphasis on the art of collecting mental symptom easily, subjective symptoms. Actually, no doubt it is an art. When a patient comes to us, most of the time, majority of the time, he states the physical problems, right? And the art of converting those physical problems, right, is into the mental rubrics is taught by Dr. Sehgal very beautifully and very simply. And सबसे अच्छा जो तरीका है, सबसे अच्छा, कोई भी पेशेंट है, सपोज एक पेशेंट आकर कहता है डॉक्टर मेरे को बुखार है, राइट, फिर दूसरा पेशेंट आता है वो भी बुखार का ही है, डॉक्टर साहब मेरे को बुखार है, राइट। These are the two statements, right? Words are the same, but they convey the different meaning, right? क्यों भाई दूसरे पेशेंट का जो स्टेटमेंट है वो इतना लाउड क्यों हो गया, पहले का इतना माइल्ड क्यों था, right? The way patient states their statement, may it be physical, right? The emotion which is being attached with it conveys the meaning, and that will mount up to the mental rubric. Getting my point? Yes, sir. Yeah. So next question, can you please explain the death presentiment? Yeah. There is fear of death. There are other rubrics: anxiety, delusion, die one is about to. What is presentiments? A feeling that something bad is going to happen just before it happens, right? जैसे एक पेशेंट को एक किसी चीजों का आभास होने लगता है कि अगर मैं इसी माहौल में रहा, राइट, अगर मैं इसी माहौल में और कुछ दिन रह गया तो मैं तो मर जाऊंगा, राइट। इसमें कोई एंजाइटी नहीं है, इसमें कोई बहुत ज्यादा फियर का सेंटीमेंट नहीं है, जो पेशेंट की एक्चुअली ऑडियो समझ में तो नहीं आ रहा था, राइट, बट उसकी जो स्टेटमेंट थी, जो भी उसकी बंगला भी बोल रहा था, जो भी कह रहा था, उसमें कोई एंजाइटी या फियर नजर नहीं आ रहा था। जैसे सपोज करो एक पेशेंट कहता है कि मुझे लगता है डॉक्टर साहब मैं तो बच नहीं पाऊंगा, एक पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मैं मर तो नहीं जाऊंगा, डॉक्टर साहब मैं तो लगता है कि मैं बच गया, right? These are the three statements, and all these three convey the different meaning. The first is very mild, right? That is presentiment of death presentiment. So second is anxiety, death awards. Third is fear of pain.
fear of being killed, right? Then fear of being murdered, right? So it depends on the intensity of the statement. If a statement is very intense, it goes to fear. If it is very mild, then it is anxiety. If it is mildest, then it is sentiments, right? Next. So next question, if patient have too many issues but he pretended that he's okay and does not want to let anyone regarding his troubles, what would be the medicine? तो उसका हमें जानना होगा why he pretends, right? What he does, why he, what he does, and how he does, what he says and how he says, right? It is not always that what he says हम वहीं पर stop कर देंगे. We have to go to the depth, right? Why and how we have to explore the patient statement, right? कि कैसे और कहाँ तक ये जाती है. जब तक पेशेंट उसका आंसर देना बंद नहीं कर देता तब तक हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, राइट? प्यार से, आराम से, जैसे भी हम लोग कर पाए उसको करना है. तो एक्सप्लोर करना चाहिए कि व्हाई ही इज प्रिटेंडिंग लाइक दैट, राइट? देन वी कैन स्पॉट द राइट रूब्रिक. Next. So next question, difference between the death conviction and death presentiment. Presentiment is just a feeling कि यार मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, राइट? जस्ट ये है, राइट? एंड कन्विक्शन तो 100% श्योर, आई एम गोइंग टू डाई, देयर इज नो वे आउट, नोबडी कैन सेव मी. इसका इलाज ही नहीं, कोई कोई मुझे बचा ही नहीं सकता, अब मरना तो है ही है. Conviction is sure, short, no chance of escaping death, right? And presentiment is just a feeling. Again, it's the difference of intensity, the way he says. Okay, sir. So next question, fear of imaginary things in last case. Instead of what people will say about her, can you explain more? Yeah, it is a just उसको बोला ना, जैसे लगा ना उसको कि अगर मेरे बारे में पता चल जाता है, if my people will come to know my name and my disease I am suffering from, that is hepatitis B, लोग मेरे से नफरत कर सकते हैं, मेरे से दूर रहना शुरू हो सकते हैं, मेरे को कोई पास में नहीं बैठाएगा, मेरे पास कोई आएगा नहीं, राइट? दीज आर द इमेजिनेशंस ऑफ द पेशेंट, राइट? राइट, ये एक पेशेंट की अपनी इमेजिनेशन है, ऐसी करा किसी ने नहीं. एंड वेयर एज द सेकंड रूब्रिक इज fear opinion of others. It is a delusion. The first case is the delusion and the other case is the fear. दोनों में बहुत फर्क है, fear and delusion में बहुत फर्क है. Fear is the a sort of fixation, जहाँ पेशेंट फिक्स हो जाता है अपनी फीलिंग को लेकर के ऐसा होगा मेरे साथ. Fear is something yet to happen, जिसको लेकर हम लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं अभी. क्या ऐसा ना होने को, मेरे को क्या कह देगा अगर मैंने ऐसा कर दिया. Fear opinion कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, डर है वहाँ. ये डिल्यूजन है, ये डर है. डिल्यूजन इज इन द प्रेजेंट, whereas fear is in the future. fear अभी हुआ नहीं, उसको लगता है कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है, राइट? डिल्यूजन का मतलब ये है कि अभी प्रेजेंटली उसके साथ उसको लग रहा है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, राइट? बट इट इज imaginary. It is just a perception of the patient where he get fixed, राइट? उसको आप कितना भी समझा लो कि ऐसा नहीं होगा, वो समझेगा ही नहीं, वो अपनी जगह रुक जाता है, स्टक हो जाता है. So next question, please guide about in journal selection of potency as well as the repetition as per cases. Potency selection, as far as our system is concerned, Dr. Sehgal's system is concerned, generally we start from the lower potencies, maybe 3x and 6x, because we have, for the last more than 25 years, I have been practicing this method, and generally we start from the lower potencies, 3x and 6, even in chronic cases, even in acute cases as well, right? And as far as repetition is concerned, is the same. जब तक केस में मूवमेंट पॉजिटिव चल रही है, जब तक कोई नेगेटिव केस नहीं होता, जब कुछ ऐसा नहीं आ जाता कि आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट रुक जाती है, तब तक हम लोग रिपीट नहीं करते, राइट? इट कैन, मोस्ट ऑफ द केसेस आर सॉल्व्ड विद अ सिंगल डोज. जस्ट सिंगल डोज इज अनबिलीवेबल. लोग आजकल देखा जाए तो बहुत, कई लोग तो बहुत दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार 1M को भी रिपीट कर देते हैं.
But in our system, generally we do not repeat medicines. और पड़ती जरूरत पड़ती नहीं है ज़्यादातर केसेस में repeat करने की, because the system is so foolproof that you can spot the right rubric very easily and touch the innermost layer of the man so as to bring the healing process of the vital energy into action. And once it is on, and it keeps on and on and on. जैसे हमने देखा जी टीवी में तो बहुत ज़्यादा पैथोलॉजी थी इसके ट्यूबरकुलर केसेस में, काफ़ी पैथोलॉजी थी वहाँ पर हाइड्रोक्लोराइड हो चुका था, तो वहाँ रिपीटिशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. And in the second case, just in few hours, the potassium came to normal. ज़रूरत ही नहीं पड़ी रिपीटिशन की. And in third case, which is a big challenge to the medical profession, right? And just 1 dose and 3 weeks time, report is normal. It's the one case because of the paucity of the time I am showing you. Otherwise, I have even more serious cases which are worked with just 1 dose of the medicine and they are out. Right? So matter is to spot the right rubric so as to touch the innermost layer of the man. Then repetition is not required in most of the cases. Next. सर बस यही कमेंट्स थे. Right, ma'am. Thank you very much. Thank you all to listen me and give your valuable time. Sir, Thank you it's very an much. sir, it's an honor that you are associated with us today, and I'd like to thank you on the behalf of BGN Group. Thank you, sir, for giving us your valuable time. Thank you, Dr. Shivani. Thanks Thank a you, lot. sir. Thanks. Bye bye.